Hi guys, in this tutorial I just explain how to declare a constructor and destructor in C++. So firstly we introduce what is constructor and why we use in C++. So what is constructor? Constructor just as a special member function of a class. So constructor what? Constructor is a member function of a class and it is used to initialize the object of its class. ये member function किसका हो गया? Just as a class का member functions हो गया and किसके लिए use हो गया? For declaration of a or initialization of the object class. So just it is treated as a special member function because its name is the same as the class name. जो class का नाम होगा वही same किसका नाम होगा? constructor का नेम होगा. ये constructor का benefit भी है. When constructor get invoked whenever an object of its associate class is created. जैसे ही object create हुआ automatic constructor invoke हो जाता है directly. So it is named as a constructor because it construct the value of data member of a class. So initial value can be passed as argument to the constructor function when the object is declared. जैसे object declare होगा initial value same as the constructor function के अंदर पहुंच जाएगी. So what is the uses of or characteristics of constructor? Now first characteristic is this should be declared in the public section. तो इसको हमेशा किस तरह से declare कर सकते हैं? As a public, no any type of, just as a declare only public. So second characteristics is they do not have any return type or not even void. No returning type means ना तो integer return करेगा, ना float return करेगा, ना double, ना char, no any type of returning and not void. void भी नहीं हो सकता. And the third characteristics are they get automatically invoke when the object are created. जैसे ही object create हुआ ये automatically क्या हो जाता है? Invoke हो जाता है. So they cannot be inherit through derived class can call the base class constructor. So easily आप उसको access नहीं कर सकते, inherit नहीं कर सकते. derived class base class के constructor को derived class में call नहीं कर सकते. Another is like other function they can have a default argument. जैसे और फंक्शनों की आर्गुमेंट होती है डिफॉल्ट, वैसे इसको भी हम डिफॉल्ट दे सकते हैं. यू कैन नॉट रिफर टू देयर एड्रेस और ना इसका एड्रेस हम रिफर नहीं कर सकते. जैसे क्लास की तरह से डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम लिख दिया क्लास कंस्ट्रक्ट. सो कंस्ट्रक्ट को हम कोई भी रिटर्निंग टाइप नहीं है, ना वॉइड ना क्लास, नो एनी रिटर्निंग टाइप. कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल एंड अगेन आई से कंस्ट्रक्टर को हम वर्चुअल नहीं कर सकते. ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि वर्चुअल कर नहीं सकते. कोई कंस्ट्रक्ट हमेशा क्लास की मेमोरी से होता है. अगर क्लास ही नहीं रहेगी तो फिर किसको कॉल करेंगे? तो कंस्ट्रक्टर को हम वर्चुअल क्रिएट नहीं कर सकते. दैट इज द फीचर और कैरेक्टरिस्टिक. नाउ जस्ट आई एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. द फर्स्ट कंस्ट्रक्टर इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. नो पैरामीटर, no passing parameter in this constructor, just only the default value in this constructor. So second constructor is a parameterized constructor, just passing parameter to the constructor. And third is the copy constructor. Copy constructor just passing object to constructor. So three types of default, parameter and copy constructor. Now what is what is constructor overloading? अगर हम same constructor name same but parameter is different, that is called the constructor overloading. तो इसमें हम default का भी यूज करेंगे, copy constructor का भी कैसे यूज करते हैं वो भी बताएंगे और parameterize कैसे यूज करोगे वो भी एक्सप्लेन करेंगे. साथ में इसमें फंक्शन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होगी इसमें इस प्रोग्राम में और डिस्ट्रक्टर का भी यूज होगा इस प्रोग्राम के अंदर.
So now, firstly, I explain. Now you know the constructor. Now I explain what is destructor. Why we use the destructor in C++. So destructor is a special member functions which destruct or delete an object. तो पर्टिकुलर उसे हमें जो ऑब्जेक्ट हमारा जो बना है उसको उसकी मेमोरी को रिलीज करने के लिए, उसकी मेमोरी को फ्री करने के लिए ऑटोमेटिकली, so we use the destructor. So a destructor is a function is called automatically when the object goes out of scope. जैसे उसका स्कोप खत्म हुआ तो उसको हम डिलीट कर देंगे. तो इसको हम चार तरह से, फोर टाइप से डिलीट कर सकते हैं. द फर्स्ट इज फंक्शन एंड, द प्रोग्राम एंड, ए ब्लॉक कंटेनिंग लोकल वेरिएबल एंड ए डिलीट ऑपरेटर इज कॉल्ड. तो चार तरीके से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. तो टाइल्ड साइन इज यूज फॉर द डिस्ट्रक्ट एनी constructor. So now let's see example how to create a constructor. Now first we just as a break, because video is very large, so just passing this video when I completed my program. Integer a b. Now here we declare the emp, that is the default constructor. A equal to 10, b equal to 20. ये प्रिंट कराना है सी आउट a plus b default constructor. So that is declared the default constructor. No parameter is passed in this constructor, so that is called the default constructor. Now create a parameterized constructor. So just declare the emp integer p comma integer q, and just passing a equal to p, same as b equal to q, and see out parameterized constructor. A minus b. So that is the parameterized constructor. So that is the parameterized constructor. Now we declare the copy constructor. So one is the default constructor, second is the parameterized constructor. So that is called the constructor overloading, because of constructor name same but parameter is different. First is default, second is the parameter, and third is the copy constructor. I just passing the copy constructor. Please just wait. Just passing address, because I pass Q. Then so equal to Q dot A, same as the B equal to
Q dot B and cout copy constructor is distance into B. So that is the copy constructor. Now closing the class bracket. Now void main. We declare the void main. So just as a CLR for holding the screen. Now create an object of this class. So emp e1, that is the first object. Emp e1 and second is emp e1. Passing parameter, two parameter is passed, so just as a passing 23 and 56. And third is emp e2 and that is emp e3 and passing the object of e2. Get ch and save this program. So nst construct or cpp, compile this program. So now we check here. So now parameterized constructor is 33, copy constructor is 1288 for multiplication, and this is a equal to 10, that is the default constructor, so no parameter is passed and no value is passed. I just remove this value because the default constructor, so the memory of create is and default constructor is nil. So just remove this thing. If you want to print, then F parameterized constructor, copy constructor. Default constructor have no any value, so just not passing, not print any type of value. Here we parameterized constructor pass, and that is copy constructor. So here we pass the 23 and 56. So 23 and 56 come to here, and if that run, here we see the minus 33, the output a minus b, and now here we pass the object of this, passing the object. Copy constructor same as the passing the object of this. इसमें हम क्या पास करते हैं, ऑब्जेक्ट. तो EMP के अंदर हमने क्या पास किया, ऑब्जेक्ट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट. तो जब हमने उसके अंदर EMP के अंदर ऑब्जेक्ट पास किया, तो सेम एज द E3 जो हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर क्या पास करेंगे, E2 object of this class. So E2 is passed in this this class constructor. So here we passing two values, so 23 is passed in A and same as the 56 is passing B. So A into B, 23 into 56 equal to 1288. So that is the output. And now here we create a destructor. Now how to create a destructor? Just use the tile sign, and here we just as a passing emp and just cout destructor is called.
So that is destructor called. Destructor is not so, but the memory object is remove or delete after the completing और रनिंग द प्रोग्राम. जैसे हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल होने के बाद रन हो जाएगा, आफ्टर द रनिंग उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसकी मेमोरी ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी थ्रू डिस्ट्रक्टर. तो डिस्ट्रक्टर इस तरह से कॉल करते हैं, जस्ट एज यूजिंग द tilde sign for creating a destructor. Thanks watching this video. If any doubt, if any problem, then you ask me in my mail ID. Thank you very much.